क्वेश्चन ये था कि पिवट टेबल का यूज क्या, व्हाट इज द यूज यूटिलिटी ऑफ पिवट टेबल? Is it used to validate the data? It is used to sort the data. It is used to create visuals in a data, or is it used for data summarization? तो अभी देखते हैं, आंसर आया है डी डी Yes. डी डी डी, वेरी गुड. So D is the right answer. Okay, this is the right answer. D, data summarization. Because when you create a pivot, pivot जो word है, इसका word भी, इसका मतलब भी यही है, summarization, to create a summary, to bring together things together. तो ना ये वैलिडेशन के काम में आता है, ना सॉर्ट करते हैं डेटा को. सॉर्टिंग इज जस्ट अरेंजिंग द डेटा इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्डर. So we are not arranging the data, we are deriving some summary from the data. And visualization is not by pivot table, it is by pivot chart. तो ये सारे आंसर गलत थे, ओनली एक ही सही आंसर था डी.